Only one question to Modi ji. How many tickets did you give to Muslims in Gujarat? How many? How many tickets BJP gave to the Muslims in Gujarat, which constitute about more than 10%? उन्होंने मुझे सवाल पूछा है कि आपने मुसलमानों को कितनी टिकट दी। मेरी पार्टी में आज भी तहसील पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला परिषद सारे में मुसलमान मेरे यहाँ मेंबर है और जीत करके आए हैं। मैंने पूछा और मैं आपको पूछता हूं, गुजरात में किसी समय कांग्रेस के 17 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, 17। इस बार कांग्रेस ने सिर्फ 4 टिकट दी, ओनली 4, ओनली 4 टिकट। व्हाई? I have only asked you one question. क्योंकि आप 17 देते थे, 4 क्यों हो गए? क्योंकि आपको लगा कि जीतने के लिए ये आपका अरिथमेटिक बैठता नहीं है। आपको 17 से 4 क्यों जाना पड़ा भाई? ये नंबर आपका सही नहीं है. It was much more. The point I'm trying to make is, don't the Muslims live in your state? Can't they represent in the Vidhan Sabha or in the Parliament? अगर वो चुनाव जीत करके आएंगे, बैठेंगे। मेरी असेंबली में आज भी 4 मुस्लिम एमएलए हैं। आज भी मेरी असेंबली में 4 मुस्लिम एमएलए हैं। पर वो चारों कांग्रेस पार्टी के ना आपके? किस पार्टी के हैं? मेरे राज्य के हैं भाई। This is what I'm saying is the politics of exclusion. मेरे राज्य के हैं। कैसे एक्सक्लूसिव? आज अभी देखिए, आपने राज्यसभा में कितने लोगों को दिया मुसलमानों को टिकट? इसके आधार पर तय होगा क्या? आपके कैबिनेट के अंदर कितने मुसलमानों को दे रहे हो, इसके आधार पर तय होगा क्या? ये सोच जो है ना, इसी के खिलाफ मेरा विरोध है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ रहा है, वाई इंडियन मुस्लिम, वाई इंडियन मुस्लिम। मैं आपको पूछता हूं, आपने कितने पारसियों को टिकट दिया? गुजरात में पारसी कम्युनिटी है। आपने कितने सिखों को टिकट दिया? गुजरात में सिख कम्युनिटी है। आपने कितने ईसाइयों को टिकट दिया? गुजरात में ईसाई कम्युनिटी है। क्या इसी तरह देश चलाएंगे क्या? फारूक साहब, लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाएं और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में लगी रहे। ये दिगी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी। और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में। और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब। और इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है। ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो, तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। ये मुंह में उंगली डालने वाली बात नहीं है। बात यह है कि वहां की पुलिस जो थी वो क्या कर रही थी, वो तो सर्वविदित है। Anyway, That is on record. I think next time, sir, when you have to ask for any, please ask me. I will send battalions as well. But do you agree with this question? Because Kashmir is not bordering Gujarat. No, Farooq Sahib, you have to be the last word on this. Yes. Narendra Bhai is raising the question. Yes, let us settle this question for our audience, that there should be ticket distribution on the basis of religion and caste or not. Is that not good? Let's be very frank about one thing. Every political party wants to win. So they want to see who has got the chances of winning. There is no question of Hindu, Muslim, and Sikhs. It's the question of, if he is going to win, we'll put him up. If he is not going to win, we're not going to waste our money on him, you see? So that is the truth about it. So he couldn't find any Muslims that could win with the atmosphere there. And I'm sure he couldn't find any Sikh, because poor Sikhs are such a small minority, minuscule probably in Gujarat, that they can't win unless Modi Sahab or L.K. Advani ji or Mrs. Sonia Gandhi and them, they support him with all the fanfare of the Congress, then he has a chance of winning. Then he has absolute chance of winning.
क्योंकि जी लोग आपके लफ्ज पे जाते हैं, नहीं तो वो क्या वो अपने आप से जीत के आए हैं क्या? उनको तो आपने जिताया है। अगर आप चाहते तो आप दूसरों को भी जिता सकते थे। Let's मगर go वो to नहीं the हुआ। audience now. I think anybody, first question, I can see so many hands. Yeah, please, you introduce yourself. Mic is there. My name is Bobby Seigel. My question is to Farooq Saab, because he gave a very emotive speech. This morning, all the business leaders asked Mukesh Ambani, how can industry, what advice would he give industry that politicians trust them? My question is, can politicians trust each other? Can you answer this question, sir? What? Do the politicians, Do the politicians trust each other? Do you trust each other sitting here on the dais? Politicians trust each other while your money is continuously coming to us. We shall keep on trusting each other so long as you give us equally. But if you don't give us equally, we will not trust each other. My question adds on then, how do we put an end to this? Pardon me? How do we put an end to this nexus between How do you politics put an and end to this business, kind of? where business asks for the trust of politicians and politicians I think so-called we have to trust you and you have to trust us. That is, trust begets trust. That is something very important. If I have malice inside and my mouth speaks something different that is not inside, then there is no trust. So I have to be clear here. As a doctor, I have to be clear here. There's nothing here. It's only pump that beats. So I have to be clear here. And what I say, I have to be honest in what I'm saying. And that is why I say the politicians need the industrialists and industrialists needs the politician. So we have to have a damn good linkage, otherwise you will also sink and we will also sink with you. Thank you, sir. That was the reason to provoke this question. Thank you. So this is a nexus, he's admitting in public that we thought there was a nexus, but he's admitting, so I can leave it there. Any other question, please? I saw some hands. Yeah, yeah. Wo piche. Shivinder Singh from Fortis Healthcare. The question is to the panel. We talked about whether development gets votes or development doesn't get votes. I don't think it's a question that you can answer for the whole country. Mr. Modi is talking about what his experience is in Gujarat. Mr. Digvijay is talking about his experience in MP. How do you compare what's happened in Bihar for the last 20 years and the ruling party coming back time and again versus what your experiences have been? Governance in Bihar. As far as I am to answer that question, Bihar, before its division, is a very rich mineral state. I went to Bihar during election time and I saw the state Bihar was in. I must confess, not now, but in the past, there has been misgovernance in Bihar. There is no doubt about it. And whoever is responsible, we all politicians are responsible, whether in center or state. We're all equally responsible for what happened. And I think what I would leave you with, as far as I'm concerned, I think it is responsibility of all senior leaders that are here, that we should make efforts that the future generation must be taught the right ways of running this country and running the parties. And that is what I say to these two large parties that really control India in a very big way, that it's high time they start having real leaders in the states rather than pulling leaders down because they disagree on some points. What we need is building leadership that can stand up and say, no, this is wrong. This is Vishal Chawla. I have a comment and a question. Comment for Mr. Digvijay Singh. Just now, Mr. Narendra Modi said that when such a committee came in and asked what you did for Muslims, what you did for Hindu, and you responded, I just worry about what I did for Gujarat. And in turn, Mr. Digvijay Singh goes back and asks the question, how many Muslims you make, and how many Muslims were allowed to get a ticket and stand in the election.
That's like an oxymoron to basically the same statement that vote bank politics exactly start from this point of view. My question is to Mr. Narendra Modi that I totally believe in the development makes a difference. Since morning, we have heard from every kind of leader, Mukesh Ambani, Mr. Mittal, that the talent and the performance defines who you are and how we are going to get to the 21st century. You just said the same thing. However, two other of your colleagues differ from it. Why is that? And how we can change that? Thank you. और कैसे बदलेंगे वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन शायद हालात सबको बदलेंगे। और मैं हालात देख रहा हूं, जिस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एरा में हम हैं, हम एक आइसोलेटेड दुनिया में नहीं रह सकते। और तब जाकर के हमने, अब देखिए मेरा राज्य में मैं एक काम कर रहा हूं इन दिनों, शायद एशिया में आई बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री। मैं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मेरे सभी गांवों को दे रहा हूं। मैं उसमें बड़ा पागल की तरह लगा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे अगर लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन देना है, मेरे गांव को मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, तो आई हैव टू डू दिस। और मैं लगा हूं उसमें। अब मुझे समझ है कि भाई आने वाले दिनों में ये चीजें काम करने वाली है। तो हो सकता है औरों को भी लगेगा कभी कि भाई ये कोई रास्ता है जिससे कुछ बदल आएगा। अगर हम देखिए रेलवे को क्रॉस करते हैं, रेलवे स्टेशन पे तो लिखा होता है कि शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। मैं समझता हूं, मैं उससे बचना चाहता हूं। और मित्रों, मैं मानता हूं कि हमें लोग सरकार में अगला चुनाव जिताने के लिए नहीं बिठाते हैं। लोग हमें सरकार में बिठाते हैं उन 5 साल के भीतर उनके हालात में सुधार लाने के लिए। और मुझे अगले चुनाव पे मेरा ध्यान पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और शायद यही मेरा कमिटमेंट है जो मुझे औरों से अलग करता है।